did not put on recording. So I repeat, objective of this lesson is to describe the construction of a centrifugal compressor, to enumerate application of the centrifugal compressor. Number 3, to describe the principle of the working of centrifugal compressor. Number 4, to draw the velocity diagram to blade inlet and outlet of the centrifugal compressor. Number 5, evaluate slip factor and power input to a centrifugal compressor. Number 6, to solve a numerical problem example of a centrifugal compressor. So now they are included in my recording, video recording. Initially it was off, so that's why I repeated it. So let's go the actual topic, which is starting from first point, construction, how it is built, how centrifugal compressor works, principle working. You can see in this diagram, these are from your book, and this is a wheel installed on the shaft, and this wheel front view is here. So central circle is the shaft, and this outer after this central circle, this bigger circle within this. So this is called hub. Sorry, this is called impeller eye. No, this is the hub. Sorry, this is the hub thickness of the wheel, which is connected to the shaft. Inner circle is the shaft, and this outer small circle is the hub. Now this you can see these are the blades. Radially these are the blades. They go radially outward, and as you can see, initially at the inlet starts from here. Radius is small and outlet radius is bigger. That's why blade velocity at inlet is different, small, and blade velocity at the outlet is high. This is tangential velocity pi dn. So since d is 2r, so that is why r changes, then velocity changes. Tangential velocity of the gas will change by rotation. So now this is about impeller, centrifugal compressor, and there are other parts shown here in the next figure. This is also from your textbook. That is Eastern Mechanical. Now, centrifugal compressor showing discharge scroll. So this part you have seen separately. This is impeller, and this outer ring, this bigger outer ring, my cursor is moving all around. So with arrows outward, this is actually diffuser. You can see area is decreasing. This is like a nozzle, diffuser nozzle. So this is fixed, and when impeller moves, the discharge is coming here, and it goes out to a pipe, which is called as, this is actually casing of the part of the casing of the centrifugal compressor, and this casing is of the shape of continually increasing diameter. So this pipe is called as, casing pipe is called as scroll, or it is called as volute. So this volute discharges the gas at the outlet. Here, 2 discharges are shown. So half volute is this side, starts from left and ends on the right, and other half starts from right and ends to the left. So from upward, from here, upward and downward tangentially, gas discharge is done. So this is how it works. This shows discharge scroll. So inside, when see from the inside, this is the shaft, and this is another type of rotor or impeller. You have seen single-sided impeller in the figure 1 above 1139. This is 1141. This is double-sided impeller. So both sides, intake can take place from both sides of the shaft, right side and left side. So you can see that on one shaft there is a wheel which can take intake from right and left, both sides, and discharge radially and upward, and then tangentially because of a scroll in any direction in which side scroll is mounted. So this is double-sided impeller for a centrifugal compressor. Now, the main features of centrifugal compressors are the main components of compressors are: number 1, impeller with radial vanes, which you have seen in the diagram; 2, diffuser around the periphery and impeller wheel; 3, scroll around the diffuser. Then there is air enters the impeller near the axle, called impeller eye in axial direction,
Air moves along the impeller vanes in radial direction with high velocity and enters into the diffuser at the tip of the impeller vane. In the diffuser flow, it started converting kinetic energy to high pressure. Scroll is like a diffuser. It also acts as a diffuser, increasing the pressure further and directing the flow toward discharge course. Practically half of the pressure rise takes place in impeller and half in the diffuser, that is scroll. Further in scroll also, after diffuser comes scroll. Scroll is also in the form of a diffuser. तो मैंने आपको बताया था भोंपू, म्यूजिक वाला भोंपू जो होता है, बड़े बड़े वो जो शादी वाले बैंड में वो उस तरह का होता है, और that is a diffuser. Now to increase the flow rate, impellers and made two-sided with the double eye, so this design balances. तो मैंने डबल impeller जो आपको बताया था, डबल इंटीग्रेटेड impeller, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा एक तो फ्लो रेट डबल होगी, दूसरा फायदा ये कि तो एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है, राइट साइड वाली इनटेक जो है लेफ्ट साइड पे थ्रस्ट मारती है और लेफ्ट साइड वाली इनटेक राइट साइड पे थ्रस्ट मारती है, तो दोनों तरफ से थ्रस्ट यानी एक्सियल फोर्स बैलेंस हो जाती है, उससे बेरिंग पे लोड नहीं पड़ता और बेरिंग जो है ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग बेरिंग नहीं, लेकिन बेरिंग में ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होती, इसलिए एक्सियल फोर्सेस आर बैलेंस्ड. This is one of the advantages of double-sided impellers. Now, inlet guide vanes is another feature of the construction of the centrifugal compressor. Now, inlet guide vanes are provided to get a free whirl to the entering air at I. So, exactly axial direction में entry नहीं होती, at particular angle में, depending on the calculations के inlet पे velocity angle क्या होना चाहिए, तो उस एंगल के मुताबिक इनलेट गाइड वेंट एडजस्टेबल होती है. मैकेनिकल एक लिवर लगा होता है जो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है, जो ऑटोमेटिक मोटराइज कंट्रोल भी हो सकता है, तो उसको मैकेनिकली वो गाइड वेंट की डायरेक्शन चेंज करके वो फिक्स ब्लेड है, वो एक्चुअली फिक्स ब्लेड है और उसको वेन कहते हैं, गाइड वेंट कहते हैं, क्योंकि उसका काम है इनलेट को गाइड करना कि किस एंगल पे इम्पेलर के ऊपर air को direct करें. So application of centrifugal compressors are many. So centrifugal compressors are used in gas turbine units of industrial marine air transport. चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, या कोई कार्गो शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, तो उसके लिए भी यूज होता है, और पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए भी. So it is used in blower. सो ब्लोअर आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पोर्टेबल ब्लोअर भी आपने देखे होंगे कि जो लोग कंप्यूटर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डस्ट साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी कामों के लिए मशीन गाड़ी की इंटरनल सफाई के लिए ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं. सो ब्लोअर के तौर पे इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. इट इज यूज्ड इन सुपर चार्जर्स ऑफ आईसी इंजन. आईसी इंजन में हमने पढ़ाया था सुपर चार्ज, टर्बो चार्जर. तो ये टर्बो चार्जर इसलिए कहते हैं कि उसमें कंप्रेसर होता है, टरबाइन होती है, और वो एग्जॉस्ट गैसेस से चलती है, और वो क्या करती है, इनटेक जो आईसी इंजन का इनटेक होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जब कार्बोरेटर में जाता है, एयर को कंप्रेस करने से ज्यादा मास फ्लो रेट ज्यादा. तो बड़े पावरफुल इंजन जो है, वो जो ट्विन कैबिन है, टोयोटा ट्विन कैबिन है, और वो जो टोयोटा जो लैंड क्रूजर है, उनके इंजन बड़े पावरफुल है, तो उनको ज्यादा एयर कंप्रेस करके देते हैं ताकि ज्यादा मास फ्लो रेट जाए, ताकि एयर फ्यूल रेशियो पूरी हो. वरना जब वो ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जब वो पहाड़ी इलाके में जाती है, रफ टेरेन में जाती है, कच्चे में जाती है, उसको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, और पहाड़ों पे जाती है तो उसको एयर की डेंसिटी कम होती है, तो मास फ्लो रेट नहीं मिलता. उसके लिए टर्बो चार्जर जो काम करते हैं, एयर को कंप्रेस करके उसमें डालते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और मास फ्लो रेट बढ़ जाता है. Now used in large refrigeration plants of vapor compression chiller system. तो vapor compression refrigeration plant चाहे एयर कंडीशनिंग का हो या कोल्ड स्टोरेज का हो, वो चिलर जो है बहुत ज्यादा मास फ्लो रेट उसको चाहिए. तो वॉल्यूम फ्लो रेट जब एवेपोरेटर में जब लिक्विड वेपोराइज होता है, तो उससे चिल्ड वाटर को ठंडा किया जाता है. फिर चिल्ड वाटर जो है ना कंडीशनड स्पेस में या रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जाके कूलिंग प्रोवाइड करता है एयर को. लेकिन चिलर के अंदर सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है पानी के साथ, जिसको चिल्ड वाटर कहते हैं, और रेफ्रिजरेंट जो बॉयल कर रहा होता है, तो उसका जो बॉयल करने के बाद जो वेपर बनता है रेफ्रिजरेंट का, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है. तो इतने बड़े वॉल्यूम को हैंडल करना सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का काम है,
तो स्पेशल रेफ्रिजरेंट भी होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं, उसका वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए वो जो ऑर्डिनरी कंप्रेसर्स होते हैं, वो जो पिस्टन सिलेंडर वाले, वो काम नहीं आते, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज होता है, उसका साइज भी छोटा होता है और फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ आपको कुछ एनिमेशन दिखाने के लिए। तो एनिमेशन दिखाने के लिए अगेन मुझे कुछ दूसरा शेयर करना पड़ेगा पेज, एंड दैट इज दिस वन। एक एनिमेशन ये जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और वो ये है ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ जब हम टरबाइन का जब एक्सियल और रेडियल फ्लो टरबाइन की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो ये एक्चुअली टरबाइन नहीं है, ये कंप्रेसर है। ये इन सेंटर में इम्पेलर है, ये वाला पार्ट इसका हब है, और इसके ऊपर ये जो छोटे ये कर्व ब्लेड नजर आ रहे हैं, ये ट्रायंगुलर टाइप के, एक्चुअली ये रेडियल है। ये इसका ये इम्पेलर आई है, और ये टैग टिप है। आपने देखा कि रेडियली बाहर जाते हुए ब्लेड्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लेड मुड़े हुए। तो ये जो इसको कहते हैं बैकवर्ड इंक्लाइन। सो दिस इज रेडियल ब्लेड विद बैकवर्ड इंक्लाइन। सो फ्लो की डायरेक्शन यानी कि रोटेशन की डायरेक्शन अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लेड को टर्न कर दिया जाता है टिप के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंक्लाइन रेडियल ब्लेड्स। सो अब बाकी आप फ्लूइड देख रहे हैं कि ये जो है, ये इसका वॉल्यूट है जिसको हम स्क्रोल कहते हैं, ये केसिंग है, और इसकी शेप देख रहे हैं, इधर से ये इतना सा डायमीटर है, छोटा है। ये जो हम ऑल अराउंड द ब्लेड जाते जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसका डायमीटर बढ़ता जाता है, और ये डिस्चार्ज में सबसे ज्यादा डायमीटर है। सो दिस इज वन एनिमेशन। नाउ आर यू वाचिंग दिस एनिमेशन? इज इट विजिबल टू यू? Anybody speak? Please unmute mic. Everybody speak. Are you watching this scroll, this moving animation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'll show you another. So this is also animation. This is a manufacturer's presentation on YouTube. Let me, his volume is okay. Now I increase the volume. I think now you will get it. Now, can you see this, please? You speak, somebody. On the screen, can you see blue colored machine? Yes, sir. Okay. So let me start to play. From the beginning. This is a special compressor of company MAN. MAN is a German company of automobile trucks and other machines. This is 8-stage compressor with the help of one motor and one shaft with gear mechanism. They run at a time. जिसमें घड़ी की सुइयां चलती हैं, घड़ी की सुइयां 3, 4, 5 हो सकती हैं, और वो उसको एक ही मशीन चलाती है गियर मैकेनिज्म की मदद से। ये इनलेट गाइड वेंट्स हैं, और ये मैकेनिज्म है, आप देख रहे हैं,
ये ऊपर नीचे मूव करने से ये एंगल चेंज हो रहा है इनलेट गाइड वेंट्स के। ये वो शाफ्ट है जिससे ये एक शाफ्ट है, ये दूसरी शाफ्ट है, ये तीसरी, इस तरह 8 शाफ्ट हैं और एक बड़ा गियर व्हील है, स्पर गियर, इसके साथ ये चलाए जाते हैं एक ही गियर के साथ, और मोटर एक गियर। This is how enters gas from the left through the internal guide mains, then radially exhausted and through the scroll gets out. आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर में बिटवीन द स्टेजेस कूल करने से आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, जो जिसमें मिनिमम वर्क इनपुट होता है। तो इंटरकूलर ये जो सिलेंडर है, ये जो वेसल्स हैं, ये एक्चुअली हीट एक्सचेंजर हैं और इसमें ठंडा पानी में सर्कुलेट कर रहा है। हर पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने से पहले गैस को ठंडा किया जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में जाने से पहले गैस को ठंडा किया जाता है, तो उससे आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव होता है मिनिमम वर्क। ये एक सेपरेशन प्लांट है जिसमें ऑक्सीजन, हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल के लिए। आजकल कोरोना है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, शॉर्टेज है, आपको पता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगे हो गए। ये पूरा ऑक्सीजन प्लांट है। हवा को कंप्रेस करके उसको ठंडा किया जाता है। लिंडे साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ मशीन में लिंडे साइकिल, ये लिंडे साइकिल। सबसे पहले हाई कंप्रेशन होता है मल्टी स्टेज में, फिर इंटरकूलिंग होती है, फिर एक्सपेंशन होती है जूल थॉम्सन डिवाइस में, और उससे लिक्विड बन जाती है ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद एक और था एनिमेशन जो इधर होना चाहिए। Can you see this? Hello, my students. Can you see this? Anybody could speak? भाई ये वाला ये नई चीज है। अब स्क्रीन पे कंपोनेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, बीच में येलो सर्किल है। Yes, sir. Okay, so let me start this animation. इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपको बताया गया।
सेंटर में इम्पेलर या रोटर है, उसके बाद डिफ्यूजर है, रेड कलर इम्पेलर है, येलो कलर जो है डिफ्यूजर है, और ग्रीन कलर इम्पेलर कैशिंग या स्क्रॉल। यहाँ से इनलेट पाइप के जरिए गैस आएगी, सक्शन होगा इम्पेलर आई में, और रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग विद वेरी हाई स्पीड। ये जो क्रॉस, ये व्हाइट कलर के क्रॉस बने हुए हैं, दीज आर वेन ब्लेड्स, rotor blades. So it throws radially outward the gas, and gas gets out through the impeller, then goes to diffuser, and from diffuser it goes to scroll, and then finally discharges here at the exit pipe. This is the diagram. Impeller inlet. Okay, the impeller consists of various vanes. This is written principle of working. Solute casing. So I hope you liked it. Let me finish this thing. Now you can see my lecture again. Salman Arshad, you can see my lecture again. Yes, sir. Okay. Now here is the blade velocity diagram at inlet and outlet of the impeller. This is the velocity diagram. A is the at inlet, B is at outlet. So you can see CV, CBI, CBR, CBE, CBI, CBE, I for inlet, E for exit, CB means blade velocity, tangential velocity. CAI is the air absolute velocity in axial direction, absolute velocity at inlet, and CA absolute velocity at the outlet. So angle, inlet will, blade velocity diagram at the centrifugal compressor blade inlet with and without pre-whirl. ये inlet ही है दोनों, एक pre-whirl के साथ है, दूसरा बगैर pre-whirl के। pre-whirl आपको बताया था inlet guide vanes होती हैं जो रोटेट करने से इनिशियली एडजस्ट कर दी जाती हैं और साथ साथ भी एडजस्ट ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के जरिए की जाती हैं या मैनुअली। तो उसको CAI का डायरेक्शन यहाँ आप डायग्राम ए में आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, CB के साथ 90 डिग्री। ये जो डायग्राम है उसको यूँ समझें कि ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और दैट प्लेन ऑफ डायग्राम पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द व्हील। सो ये एक्सिस ऑफ द व्हील में से पास हो रही है। तो ये अगर इस तरह ये वाली जो वेलोसिटी होगी 90 डिग्री टू रेडियल वेलोसिटी होगी CAI, तो ये रेडियल वेलोसिटी डायरेक्शन है वर्टिकली आप, और हॉरिजॉन्टल जो है ये ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इनलेट पे जब एक्चुअली इंटर नहीं होगी ये एक्शियल डायरेक्ट CAI एक्शियल में नहीं होगी तो उसको हम प्री वर्ल कहेंगे, इसलिए ये जो एंगल ऑफ प्री वर्ल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो डायग्राम है, the plane of the diagram is horizontal plane passing through the axis. CBE is larger than CBI because CBE is larger than CBI because flow is radial and X is at the tip of the radius. For beta E, वो अगली diagram से आपको नजर आएगा, beta E for radially inclined blade is 90 degree and relative velocity CRE is axial. So ये आप देख रहे हैं कि बीटा ई जो है ब्लेड एंगल है वो वर्टिकल यानी एक्सियल एक्सिस के साथ मेजर होता है गैस टरबाइन में भी और कंप्रेसर्स में भी। सो स्टीम टरबाइन में इसको हम बीटा को टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ
यानी ब्लेड वेलोसिटी के साथ उसको मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन नजर आएगी आपको। तो BE इज लेस देन 90 डिग्री फॉर बैकवर्ड इंक्लाइन। तो ये यहाँ जो आपने देखा होगा वीडियोस में कि बैकवर्ड इंक्लाइन प्लेन तो दिखाए गए थे, मैंने आपको बताया था। तो उसका ये फायदा है कि ये बैकवर्ड इंक्लाइन प्लेन वाली डायग्राम ये B वाली है 11.43 ब्लेड वेलोसिटी डायग्राम एट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ब्लेड आउटलेट फॉर रेडियल इंक्लाइन A। दिस इज रेडियल, एक्चुअली रेडियल इंक्लाइन का लफ्ज पता नहीं इंक्लाइन क्यों यूज कर रहा है। रेडियली का मतलब सीधा सीधा रेडियली, और बैकवर्ड इंक्लाइन का मतलब रेडियली तो ये भी है, लेकिन उसका टिप जो है ना बैकवर्ड इंक्लाइन है, आगे से जाके कर्व हो जाता है। तो इसको हम बैकवर्ड इंक्लाइन के लिए फायदा ये है कि आपको CW एग्जिट, जो वर्क कंपोनेंट ऑफ एग्जिट है वो कम हो जाता है, और यहाँ वर्क कंपोनेंट ऑफ एग्जिट इज लेस। तो वर्क कंपोनेंट ही से वर्क इनपुट बनता है, तो उससे का मतलब है आपका वर्क इनपुट रिड्यूस हो जाता है। बैकवर्ड इंक्लाइन प्लेन का ये फायदा है। तो लेकिन ये जो डायग्राम डॉटेड लाइन में दिखाई गई है, ओके वक्त खत्म होने वाला, डॉटेड लाइन में जो दिखाई गई है वो दरअसल ये दिखाया गया है कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस एक्चुअल वर्क कंपोनेंट CWE इज लेस देन आइडियल। आइडियल ये ऊपर है, CWE ये ऊपर वाली डायग्राम, ये ऊपर वाली जो वेलोसिटी है, ये बड़ी वाली, ये जो वेलोसिटी है ये इसकी लेंथ ज्यादा है, और नीचे जो है CWE आपको नजर नहीं आ रहा है, इसके ऊपर डैश लगा हुआ, ये ऊपर डैश लगा हुआ प्राइम, ये डैश का मतलब ये है यानी कि कॉमा या अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो ये टाइम हो गया। हाँ हाँ ठीक है, अपॉस्ट्रोफी मुझे खत्म करने दें, वो टाइम खुद ब खुद कट जाएगी, वो जो ना जूम वक्त ज़ाया न करें, लेक्चर मुझे बोल दें, वो ऑटोमेटिकली जो है ना बंद हो जाए। अच्छा, अब ये जो है this is how velocity triangles are drawn here at inlet and outlet. Now there is a small definition which is called this is called as slip. So slip और slip factor हम define कर रहे हैं आगे। तो slip factor define करने का ये तरीका है कि the actual world velocity CW prime apostrophe is less than theoretical world velocity CW due to inertial effect on the air trapped between the bands. Now this phenomenon is known as slip, and ratio of actual world velocity to theoretical world velocity is called slip factor. So this is the equation. Now work input is equal to mass flow rate multiplied by product of CB multiplied by work component. So blade velocity multiplied by world velocity at exit minus blade velocity, product of blade velocity and world velocity at the inlet multiplied by mass flow rate. This is the work input to centrifugal compressor. उसके बाद सोल्ड एग्जांपल है, ये आपको मैंने इसकी करके दे दी है। उसके बाद एक अनसोल्ड प्रॉब्लम है जो बुक में दिया हुआ है, अनसोल्ड 11.20, ये दो, इसको हम असाइनमेंट के तौर पर देंगे जब इसका असाइनमेंट की बारी आएगी। कल मैंने अपलोड किए थे आपको असाइनमेंट वगैरह, आपने मिल गया आपको? यस सर। हाँ ठीक है, उसके ऊपर हम काम करें, और अब हम खुदा हाफिज करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर इज ओवर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।